हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस डेली लाइव मार्केट सेशन। अपस्टॉक्स के इस ऑफिशियल चैनल पे हम रोज सुबह मिलते हैं 8:45 से 9:40 के बीच में, जिसमें हम मार्केट की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू एनालाइज द मार्केट ट्रेंड्स, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड अदर प्रोमिनेंट इंडाइसेस आर हेडेड टुवर्ड्स। इसके अलावा वी ऑल्सो ट्राई एंड फाइंड आउट विच आर द स्टॉक्स which are buzzing in trade today, and we fall short of giving a trade recommendation because that is not the purview. We only do market analysis from an educational and learning perspective and not really give a trade recommendation or as such. चलिए, तो आज का सेशन चालू करते हैं। आई होप माय ऑडियो वीडियो इज ऑल क्लियर, and these are the standard regulatory disclosures. Name Amit Goel, CMT and a SEBI registered RA, registration details and standard warning and disclaimers along with disclosure of financial interest for all your consumption. Now, सबसे पहले हम लोग डीप डाइव करते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में क्या हो रखा है, अगर आप देखें, निफ्टी जो है एक चैनल में चल रहा था। चैनल किस तरह से है, फ्रॉम से 15th of June हम लोग एक चैनल में चल रहे हैं, एंड हम लोग अभी जो है आर एट द बॉटम ऑफ द चैनल और नियर द बॉटम ऑफ दिस चैनल। Along with that, if you notice what is happening in the US market, in the international market, handover जो है वो 85 points नेगेटिव दिखा रहा है, बिकॉज देर इज सम बिट ऑफ फ्लेयर अप इन द वेस्ट एशिया क्राइसिस। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बीच में नया कुछ बखेड़ा खड़ा हो रखा है, उसके चलते थोड़ा सा यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी जो है वीकनेस के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। सो अगर गिफ्ट निफ्टी रफली अबाउट 84-85 पॉइंट्स के वीकनेस के साथ खुल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वी माइट possibly do this, which is we might possibly, one second, let me start the annotation tool. We might possibly open in this area, okay, which is where we have the pivot support from an intraday perspective, and more importantly this channel support. All right, so now if we land up somewhere around this area, and I am not saying this channel is sacrosanct, कि ऐसा नहीं है कि ये चैनल के नीचे प्राइसेस नहीं जाएंगे, एब्सोल्युटली जा सकते हैं। मोर देन द चैनल सपोर्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, ये जो लेवल है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, बिकॉज यहीं से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। दिस इज अ फ्रेश एरिया ऑफ सपोर्ट, एंड ये चैनल का बॉटम भी था जहां से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पिवट बनाकर ऊपर गया है। सो देयर इज दिस गैप लेवल, इफ यू मे, राइट, बट मेरे ख्याल से नीचे तक मार्क कर लेने में कोई हर्जा नहीं है। सो फॉर मी द मोर क्रिटिकल लेवल वुड बी 23,500। ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता है, ओके, फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। आज क्या होगा, आज क्या 24,175 से बाजार सीधे सीधे 500-700 पॉइंट नीचे जाएगा? द आंसर इज नो। बट सिंस वी आर, इफ वी ब्रेक दिस चैनल, तो वी कुड पॉसिबली कम इन दिस एरिया, बेस हियर. I am hoping that it bases here and then possibly head out. So this becomes my more important sign of reversal. ठीक है, तो till that happens, we will take every day as it comes. And अभी फिलहाल के लिए जो है market are looking weak. Market could possibly test this support level. All right, तो 84 points negative gap, and we are close to a support area. These are my important bits फॉर निफ्टी। इसका अभी इंट्राडे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है। राइट नाउ, इफ यू सी इन द इंट्राडे टाइम फ्रेम ओवर द लास्ट फ्यू डेज, अगर मैं यहां से मार्क करूं, राइट फ्रॉम दिस एरिया विच इज 12th of August, so half of August we have been in a sideways trajectory of about 400 odd points. 24,000 से लेके 24,400 तक हम लोगों ने पिछले कई दिनों तक इस लेवल तो मार्क किया है। कैन यू सी दिस इज दैट एरिया। तो 24,429 और 24,400 राउंडली, round about, and 24,000 on the downside. So we have been in this market between these two areas right from this drop down, this breakdown, which is on the 12th of August. तो 12 अगस्त से लेके 31 अगस्त कैलेंडर डेज में हम लोगों ने अधिकतर अगस्त जो है एक 400 पॉइंट के टाइट रेंज में बिताया है। अब क्योंकि आज मार्केट नेगेटिव हो रखा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो पिवट सपोर्ट हम लोगों ने मार्क करके रखा था,
इसको शायद मार्केट तोड़े, वी कैन रिमूव दैट फॉर द टाइम बीइंग, एंड मार्केट जो है 23,900 24,000 के बीच में इस एरिया में, सो दिस एंटायर congestion area from where the market has taken support, ये comes into play. So for me, if I have to note down, my support for the day would be 23,891, 24,041. Okay, so let's note down Nifty support 23,891, resistance 24,041. Okay, so this is what we are writing. Flare up in West Asia crisis, negative bias to the week. ठीक है, overnight handover weak, morning cues weak, gold and silver G and S are weak, so is crude, which is surprising क्योंकि crude generally वेस्ट एशिया क्राइसिस में फ्लेयर अप होता है, बट इफ यू नोटिस, ओ इज इट, सॉरी माय बैड, इट इज अप बाय 202%. सो गोल्ड एंड सिल्वर, इवन आई वाज वंडरिंग, मैंने शायद गलत देखा, आर वीक, crude flares up, right? Yeah, this kind of works to the pattern, it works as per the script. Negative opening. Okay, open interest levels, let's see where are the open interest levels for Nifty. Now, open interest levels on the 15-minute time frame, which is more towards हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम में, तो अगर मैं सपोर्ट देखने की कोशिश करता हूं तो 24,100 पे सपोर्ट है, ठीक है, एंड 24,000 पे भी सपोर्ट है, राइट? वेयर इज द मार्केट? 24,175, 24,175 की क्लोजिंग, एंड अगर हम लोग 80 पॉइंट्स और नीचे खुलते हैं तो रफली 24,100 पे खुल रहे हैं. So let us mark this. Support at 24,100, 24,000. Okay. This is your put open interest rather. Why? Okay. And if I have to talk about my calls, it is 24,000. The nearest term is 200 and 300. Yeah, it's a fairly dispersed why? 24,200, 24,300. So we have a fairly even Steven dispersed open interest levels. करंट मार्केट से 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, करंट मार्केट से 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है. तो आर वी एक्सपेक्टिंग एनी फायरवर्क्स इन द डे? आई डोंट थिंक सो दैट वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ फायरवर्क्स एज सच. बहुत बड़ा मूविंग डे, शायद ट्रेंडिंग मूविंग डे नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए, right? Because support and resistances are even Stevens, are fairly well balanced, ठीक है ना, are fairly well balanced, right? So we could, after a gap down, possibly look to consolidate. Okay, so this is our view. Intraday technical structure, while weak, markets could look to consolidate after a negative open, right? ये हमारा इनिशियल असेसमेंट है. हैंडओवर हैज बीन इज वीक, देन यू हैव crude flaring up, gold and silver weak, equity markets in the US, Asian market cues are all weak. So हमारा हैंडओवर वीक है. स्ट्रक्चर जो है सपोर्ट के पास है, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर में 23,900 एंड 24,000 के बीच में हमारा एक ब्रॉड सपोर्ट बनता दिख रहा है, जिसके आसपास भी हमारे पुट ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट्स दिख रहे हैं, राइट? सो इवन इफ वी ड्रॉप डाउन, देयर कुड बी मल्टीपल लेवल्स ऑफ सपोर्ट आइदर ऑन प्राइस एक्शन और ऑन ओपन इंटरेस्ट लेवल्स. सो द की इज, while we are looking to gap down with about 84, 85 points,
we might not see a strong follow through in the market. And don't be surprised if there is a reversal also, because we are at a lower level. Okay, let's look at the technical structure in terms of RSI. Where are we? Are we seeing any sort of oversold nature? Uh, Let me just check that. This is the 75-minute time frame. Okay. We do not have a strong positive divergence, but there is a hint of a no, there is not really a hint of a positive divergence. Let's see. ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस तो इधर था. देयर वाज अ क्लियर मार्क हियर, राइट. यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, right? This was a case of positive divergence and the market has moved up here. So positive divergence contra call यहाँ पे सही जाता, but otherwise इस तरह का यहाँ पर कोई भी और एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है. All right, now let's move on. Let me just go through some of the questions. I am working from a different location today. I have come to a different city कुछ काम से, and hence I'm having to work from the hotel room, but still I think the network is strong enough. Let's see, प्री ओपन मार्केट ओपन होने में अभी भी 4-5 मिनट है. हम लोग बैंक निफ्टी भी देख लेंगे. इन द मीन टाइम मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ. Thank you for Friday's session, sir. Until last Friday, I was just tracking a fixed 200. Now I am learning to identify with. Okay, all right. We are doing a after hours session on Fridays, in which we are looking at creating a screener to scan stocks as per momentum and as per other various things. Okay, so anybody who's interested in learning how to create screeners for stock selection, for trading, and for investing purposes should attend that session. Good morning. Sir, what is the view on MSCI rebalancing? Sunil Kumar has a point. Today is the MSCI rebalancing. So after 3 o'clock, there is going to be a lot of wild reaction in the market. Okay. And how do we identify which are the stocks? Simply say MSCI rebalancing India announcement. MSCI rebalancing August 2026. So यहाँ पर कौन से stocks में पैसा आने वाला है? Right? Which are the stocks which is going to see money flow? So key additions and inclusions, inflows. जहां पर inflow आएगा तो क्या होगा? There will be a lot of buying in those stocks. So there is a possibility that those stocks can see a flare up during that MSCI rebalancing window, which typically happens around 3 o'clock. But the market is not normal today. ठीक है, कैश विंडोज भी ओपन हो जाते हैं 315 320 के बाद. तो कैश विंडो, एमएससीआई, मार्केट क्लोजिंग, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, सो आई वुड वांट यू टू बी अ लिटिल केयरफुल कि भाई इन सब चीजों से दूर रहे तो बेटर है, अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग दिस key events. If not, it is better that you stay away from that, from these events, because it could move sharply and in either direction. But typically, whenever there is an inclusion, whenever there is a buying opportunity in a particular stock, that stock has tendency to go up during that buying session, right? In spite of everybody knowing about it, एक लास्ट में वो एक फ्लेयर अप जरूर होता है. सो अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ग्रो, लेंसकार्ट, लॉरस लैब्स में आपको वॉच लिस्ट में रखना है. आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें शायद एक अपमूव आने की chances है on account of MSCI inflows. Which are the stocks which can have a downward pressure? बालकृष्ण, SBI Cards, Astral. ये तीनों में थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर हो सकता है. आई मीन दिस इज द थंब रूल इन्फ्रेंस. जरूरी नहीं है कि ये हो. Okay, and again, not a trade recommendation or anything. It is just a general observation of how MSCI rebalancing works. All right. So, but because there is cash also, so be a little careful. And मैं अगर होता आपकी जगह पे, तो I think I will survive if I don't trade this. तो मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता. And anyways, if I'm an intraday option trader, I would be out of the market by about 2:55, 3 o'clock maximum. I don't want to get into the cash window. Okay, there are a lot of news about cash window causing very sharp movements for option buyers, right? You could explore that opportunity,
if at all it presents to you. But as a normal trader, you should be staying away from the cash impact window. All right. Now, where is the market opening? The market is opening around, let it settle down. 9 o'clock का देखने का तो कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता. मैं कुछ और क्वेश्चंस देख लेता हूँ till the page loads. Shankar Gaud Marigauda says the Sensex put holding loss running 26,000, 76,200. Sensex का 76,200 ले रखे हो, 76,600 पे market है. All I am saying here is, and again, I'm not risking giving a trade recommendation or analysis. The current market price of Sensex is 76,000, let's say 500. Okay, 500 to 600. You are holding a put of 76,200. This put is an OTM put. OTM put has only time value. Okay, so anybody who is buying, अगर आप ये पुट खरीद रहे हो एंड आप ये सोच रहे हो कि भाई मैंने सस्ता पुट खरीदा है, तो आपने सस्ता पुट नहीं खरीदा है, आपने बेसिकली चिप्स का पैकेट खरीदा है जिसमें चिप्स ही नहीं है एंड ओनली एयर, राइट? इट हैज ओनली टाइम वैल्यू. ऑप्शन प्रीमियम्स हैव टू थिंग्स. Premiums have time value plus intrinsic value, right? Whenever you buy option, you buy an option which has intrinsic value. Whenever you sell an option which has only time value. ओके, तो आप इन द मनी बाय करते हो या एट द मनी बाय करते हो, आप ओटीएम वाला ऑप्शन नहीं बाय करते हो, राइट? सो ये एक टेक्निकल फ्लॉ है आपके व्यू में, आपके आपके एक्शन में. इसके कारण इन स्पाइट ऑफ योर व्यू गोइंग राइट कि भाई यू बॉट अ पुट बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो डाउन, बट यू बॉट एन ओटीएम पुट, यू विल फेस लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ थीटा डिके. ठीक है, तो आपका व्यू सही भी जाएगा, उसके बाद भी आपको लॉसेस हो सकते हैं. मेरा दिस इज एक्टिंग अप अगेन. Just give me a second, I will share back. Okay, and I will start my Epic pen because my thing is acting up. Okay, till it starts. All right, friends. Now market अभी 20-22 पॉइंट ही दिखा रहा है नेगेटिव, which is surprisingly good. If it is not going to open with a big bang down move, it is a nice sign ना हमारे लिए. चलिए, let me see some more questions. शंकर गौड़ जी एक बार सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा सर, बार बार सवाल करेंगे तो बाकी लोगों का सवाल, अदर्स क्वेश्चंस एंड कमेंट्स गेट हिडन, सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डू दैट. Okay, now Ashil sir, Amit sir, as you teach us, delivery percentage provides valuable data to support price action. Can we correlate NSA delivery data with OI spurts for strong conversion? If yeah, absolutely. Delivery data, which is cash market, derivative data, which is shown by OI and developing OI or changing OI, अगर दोनों का combine करते हो, see the ideal way to do is this way. ठीक है, आप तीन चीज कंबाइन कर सकते हो. मतलब सी आई डोंट वांट टू गेट टू टेक्निकल और टू कंफ्यूजिंग, बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि दिस इज हाउ यू कैन लुक एट मार्केट्स, लेट मी जस्ट राइट दीज थिंग्स डाउन फॉर यू. लेट मी राइट इट हियर. ठीक है, आप प्राइस एक्शन देखो, अलॉन्ग विथ प्राइस एक्शन विच इज अ टेक्निकल सेटअप, आप ओआई देखो प्लस डिलीवरी, कैश डिलीवरी हाई होना चाहिए. ठीक है, लॉट ऑफ मनी. सो व्हाट दिस सेज इज price action should be positive, OI should be supportive, cash delivery, cash market में delivery percentage along with delivery actual values
मोर देन द परसेंटेज एक्चुअल वैल्यूज देखना चाहिए कि भाई पहले 20 करोड़ का डिलीवरी हो रहा था, आज 100 करोड़ की डिलीवरी हो रही है, so somebody is putting in extra 80 crores in that counter, तो वो आपके लिए एक ट्रिगर होना चाहिए. सो पॉजिटिव प्राइस एक्शन, positive supported by positive OI, okay, which is derivative, if it is a derivative counter, obviously, or then you have cash deliveries, rising cash deliveries. ठीक है, राइजिंग कैश डिलीवरी. इतना तो आप लोगों ने क्या देखा, क्वांट नंबर्स. सो यू सॉ प्राइस एक्शन विच इज पॉजिटिव, you saw delivery data which is positive, you saw OI data which is positive. Okay, these are all quant data numbers हैं. Along with this you see corporate action. कॉर्पोरेट एक्शन में क्या हो सकता है पॉजिटिविटी, यू कुड हैव ऑर्डर फ्लोस, आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, कंपनी इज गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव न्यूज. कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग मर्जर या एक्विजिशन अनाउंस किया है, या कैपिटल इन्फ्यूजन, या बाई बैक, यू नो, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च, या कैपेसिटी एक्सपेंशन, any of those, you know, 8, 9 or 10 positive news developments of a company which could signal कि भाई कंपनी काम अच्छा कर रही है ना. तो ये सारी चीजें अगर कंबाइन होती हैं, राइट, ये आप अलग अलग पॉइंट्स पे देखो. अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इतना सब देखने का मतलब नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट. बट अगर आप पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हो, इफ अगर आपको कोई स्टॉक में लंबा पैसा लगाना है, या आप वीकेंड ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, राइट, यू वांट टू ग्रेजुएट योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ फ्रॉम अ ट्रेडर टू एन इन्वेस्टर, सो टू स्पीक. I'm not saying that traders are lower, but if you want to convert from being a pure trader to a trader quasi investor, right? You need to have a look at a holistic picture. Price action सबसे पहले, क्योंकि भाव भगवान छे. Then you see a developing OI which is supportive, which should be supportive. Cash delivery values मतलब 10, 20, 50, 100 करोड़ values are increasing. Okay, delivery values are increasing, that means more people are creating fresh positional view on that counter. Along with this, if you see in the last 1 week 1 month, positionally बात कर रहा हूं, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट आती है उस स्टॉक उस काउंटर के आसपास, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल फॉर यू. प्राइस एक्शन चार्ट्स पे दिखता है, ओआई डेटा दिखता है, कैश डिलीवरी एंड कॉर्पोरेट एक्शन आपको एनएससी की वेबसाइट से ढूंढना पड़ेगा. देयर आर अदर वेबसाइट्स आल्सो व्हिच प्रोवाइड दिस एट अ कॉस्ट, but since we are on our particular your Upstox channel, I will not be able to comment too much on it. All right, now where is the market opening? Let us see. Has the market settled? 908, 60 points. Nifty is opening down by 60 points, which is softer, which is better than what Gift Nifty had suggested. ठीक है, it's a nondescript opening. It is opening at what level? It is opening at 117, which is, you know, it's an inside day. अगर आप देखो, what is an inside day? Can you note this? The top previous day high, previous day low, right? इसके अंदर इधर खुल रहा है, so this is an inside day. Okay, if it is an inside day, मेरे लिए resistance and support, this becomes my resistance, this becomes my support. Okay, so what is, if this is my resistance and support, right? Prices are opening here. If the price comes here, support hai, right? What will you tend to do? You will look for basing and a signal evidence that it wants to go up till resistance. All right, if it comes to a resistance, it should base, then move this way. Can it do this for infinity? The answer is no, right? Eventually it will either break out on the top or break down on the bottom, right? So these are your 1, 2, 3, 4 scenarios. ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू ट्रेड्स, आई एम गिविंग यू सिनारियोस कि भाई अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर है, इनसाइड डे है, इफ इट हिट्स द सपोर्ट बैंड एंड बेसिस, then you have an opportunity to look for evidence that the market is going up. But if it doesn't hit the base and it breaks down,
then you have these two trades in play. ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी. सो इट लुक्स लाइक अ कोई बहुत ज्यादा ऐसा मूवमेंट देखते हैं क्या हो रहा है इंट्राडे में यहां पर खुल रहा है. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट बैंक निफ्टी एज वेल. राइट, व्हाट इज बैंक निफ्टी डूइंग? फ्रॉम 12th of June हम लोगों ने बैंक निफ्टी का एक रेंज आइडेंटिफाई किया है विच इज 58,700 to 56,000, roughly about 2,700 points. We have seen a band. Okay, and bank nifty has been in this band for infinity now. मतलब ये बैंड में ही चल रहा है. ठीक है, हम लोग इस बैंड का स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, आयन कॉन्डोर, आयन बटरफ्लाई कुछ भी बना के बैठते, ठीक ठाक पैसा बन जाता. राइट, डज द व्यू चेंज हियर? You tell me. It is opening smack in the middle of this band right at the turn of the month. Okay, we are in the middle of the range, right? And we are in here on 31st August. So what's your view for September? I think the view for September is fairly obvious, but I'll wait for friends to give a comment. In the meantime, let me just see what questions I have. विष्णु यादव बोलते हैं अपलर्न में आपका ऑप्शन का कोर्स था कुछ दिन पहले, वो कैसे कैसे मिलेगा सर? वो कोर्स कैसे मिलेगा? अच्छा, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है पढ़ने में. वो कोर्स कैसे मिलेगा? अपलर्न पे मेरे ख्याल से अभी भी मिल जाना चाहिए. आप थोड़ा सर्च करेंगे तो मिल जाना चाहिए उसमें. रनिंग चार्ट 3731 आईटीसी, आपने आईटीसी की माला जप ली है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया, यहाँ पे सिंगल स्टॉक के डिस्कशंस नहीं होते हैं क्योंकि हम लोग ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं देते हैं. आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू आंसर ऑन द बैंक निफ्टी फ्रंट. इन द मीन टाइम लेट मी जस्ट रन थ्रू सम ऑफ द अदर क्वेश्चंस. Sonabja says, hi Sonabja, good to see you back. Morning, sir. If MSCI bring money to added stocks, isn't it a good bet to put money on those stocks for short-term gains? Yeah, like I said, like we discussed, Sonabja, that's the general inference, and that is what a lot of people have seen that happening. We have seen that happening, and the stocks which are likely to see inflows and outflows have also been discussed. Just Google it again, and you will find those stocks. I think Adani Green was there, Adani Energy Solutions was there, Grow was there, and a couple more stocks. I don't recall the names. And SBI Cards, Astral Pipes, और एक और में शायद विड्रॉल्स है, मतलब रिडक्शन है एमएससीआई में. तो आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा लिस्ट. एंड टिपिकली अगर वहां पर पैसा आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है, एंड दैट विंडो इज अराउंड 3 o'clock, typically you should see movement in that direction. अगर पैसा निकल रहा है तो स्टॉक को गिरना चाहिए, अगर पैसा ऐड हो रहा है तो स्टॉक को शायद बढ़ना चाहिए. बट अगेन नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन और एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पर कैश का भी विंडो कोइंसाइड होता है. तो ये पहली बार होगा हमारी लाइफ टाइम में कि कैश एक नया चीज है जो अच्छे से सेटल नहीं हुआ है. आई एम गेटिंग डाउट्स वेदर वी रियली नीड इट और नॉट. ठीक है, मतलब ठीक ठाक सिस्टम चल रहा था उसको, तो वो आज की डेट में थोड़ा बिगड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कैश विंडो. तो दोनों तीनों चीजें हैं, खिचड़ी बनी हुई है, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है. यू मे और मे वांट टू टेक अ व्यू ऑन दैट. नाउ राहुल राणा सेज मार्केट कंफ्यूज्ड राइट नाउ. टेक्निकली जब तक 24,000 के ऊपर है लॉन्ग कर सकते हैं, 24,200 के ऊपर, बट पिक्चर इज नॉट क्लियर. Absolutely, it's a sideways market with an uptrending slope. Okay. जब निफ्टी 19,000 पे था तब भी ये डेज थे सर. हाँ, सी मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, वर्टिकल लाइन में नहीं जाता है, उसमें ऊपर नीचे होता है. सो व्हेनेवर ये रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट होता है या इम्पल्सिव करेक्टिव मूव्स आते हैं, तो सब तरीके के डाउट्स होते हैं. तो यू विल हैव टू जस्ट लिव विद इट. दैट इज हाउ द मार्केट फंक्शंस. उमंग भावसार बोलते हैं पुट 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 पुट.
ठीक है सर, आपने बोला मैंने सुन लिया। आई कैन नॉट रियली कमेंट एनीथिंग ऑन दैट। उसके अलावा और क्या है? लेट्स सी द मार्केट्स हैव ओपनड। मार्केट्स हैव ओपनड, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। लेट्स एक्टिवेट द वाई प्रोफाइल एज वेल। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ऑन द सितंबर का क्या व्यू बनता है। करेक्ट, ये सितंबर का व्यू का मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों से। व्हाट इज निफ्टी डूइंग? निफ्टी 113 सीधा सीधा वो वीकनेस दिख रहा है मार्केट में। 24,000 पे आके निफ्टी रुका हुआ है। लेट्स एक्टिवेट निफ्टी। निफ्टी आ गया इधर, राइट? Let me delete this. Okay, Nifty is here. We can all see that Nifty is, you know, testing this support level. Let's open the OI and change in OI पे हम लोग ध्यान देंगे. Okay, let's see. 24,100. There are more puts being witnessed as compared to calls. But in terms of writing, फिर भी वेट करते हैं कि बाजार क्या करना चाहता है. निफ्टी showing a 130, काफी sharp slide दिख रहा है in the opening ticks. We will wait for the markets to, kind of settle down and then take a punt, or at least take a view on that. Now, Sunil Kumar says, sir, do you suggest buying ITM and ATM always? So it is like this. Do I suggest? I mean, the theory says that you buy options which are ATM or ITM because of the inbuilt intrinsic value in it. Okay, you don't buy OTM options. That's the theory, right? Unless, of course, you have a very strong conviction that the market is going, like market is at let's say 24,000, and you have a conviction that the market will go to 23,000. आपका एक बहुत strong view है कि ये महीने में 23,000 तो नीचे जाएगा मार्केट. ठीक है, नॉट अ व्यू दैट आई एम प्रेजेंटिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल. ठीक है, या 25,000 तक मार्केट जाएगा. वेरी स्ट्रांग व्यू. When you have a very strong view, you may want to go a couple of strikes in the in OTM space to try and maximize your returns, right? But these are like extreme cases. 99.99% you are better off selling OTMs, buying ATMs or ITMs, or doing a spread of that. Okay, good morning, Harish Mutreja. Sir, I really learn a lot from your videos. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for such detailed and insight-rich explanation. It adds real value. Arey bhai, thank you, guys. Seller's paradise, Bank Nifty. Seller's paradise, absolutely. Bank Nifty, matlab, has been as the word as Harshal has said, it has been a seller's paradise for sure. देखो, it's a perfect storm in a teacup. मतलब आंधी तूफान हो रहा है मगर चाय की केतली में हो रहा है, तो यार कुछ नहीं हो रहा है बेसिकली. इससे शांत बैंक निफ्टी का स्वभाव मैंने नहीं देखा. जब से ये वीकली वीकली हटा दिया है ना, और बैंक्स में एचडीएफसी बैंक इट्स लाइक लिक्विड ऑक्सीजन. एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी को बढ़ने नहीं दे रहा, आईसीआईसीआई बैंक बैंक निफ्टी को गिरने नहीं दे रहा. जब तक ये दोनों इसी चाल से चलते रहेंगे, बैंक निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला. बिकॉज दीज आर हेवी वेट्स. दीज टू आर हेवी वेट्स. हेवी वेट्स कैसे हैं भाई? मतलब इतना शांत, इतना परफेक्ट कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन मैंने आज तक किसी सेक्टर में, और वो भी यू नो दो हेवी वेट्स में नहीं देखा है. देखो, बैंक निफ्टी का इंडाइसेस अगर मैं फैक्ट शीट देखता हूं, ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन इन अ सेकेंड. बैंक निफ्टी का देखो, एचडीएफसी बैंक 18% है, आईसीआईसीआई बैंक 15% है. करेक्ट. अब आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक परफेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. आईसीआईसीआई बैंक बढ़ते रहेगा, बढ़ रहा है, एंड एचडीएफसी बैंक नीचे. बाकी सबका भी हो रहा है, बट एसेंशियली बैंक निफ्टी में ना ये दो स्टॉक्स का ही मेजर रोल प्ले हो रहा है फॉर द टाइम बीइंग, राइट? फॉर द फोर्सिएबल पीरियड. मतलब नॉट अ फोर्सिएबल पीरियड, फॉर दिस पीरियड, राइट? एचडीएफसी बैंक बढ़ नहीं रहा है, आईसीआईसीआई बैंक गिर नहीं रहा है, और बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है. सो हम लोगों ने बोला ये बैंक निफ्टी में ये चीज हो रही है, एंड दिस इज वेयर इट इज. व्हाट इज निफ्टी आल्सो डूइंग? लेट्स सी व्हाट इज द
open interest showing developing open interest, calls are being written more as compared to puts. आप क्लियरली देख रहे हो डाउनवर्ड बायस है मार्केट में इंट्राडे में। ओके, क्या हम ये लेवल को 24,000 के लेवल को तोड़ेंगे? द आंसर हियर सीम्स टू बी नॉट सो इजी। 24,000 का जो लेवल है ना, अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें 24, आज का डेवलपिंग हुआ है, डाउनवर्ड प्रेशर जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि 24,000 इतना आसानी से टूट जाएगा, सिंपली बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुट ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट एट दैट लेवल। ठीक है, सो एज आई सेड, our first conclusion, our first view was that markets are opening down on account of the handover from the global markets being weak. West Asia crisis, crude being up, Asian markets being down, so on and so forth. So downward pressure. FI also continue to sell, so on and so forth. Right? In spite of that, because we are at a support level and price action, open interest data points towards a possibility of consolidation. हमारा व्यू ये बना कि भाई बाजार खुलेगा तो सही नेगेटिव, विच इज ऑब्वियस लुकिंग एट गिफ्ट निफ्टी, बट खुलने के बाद क्या होगा? while weak, we will look to consolidate after a negative open, and that is what we are seeming to do. ठीक है, तो निफ्टी यहां तक छोड़ते हैं। लास्ट में हम लोग इट इज 920, 940, 945 के बीच में वापस एक बार रिविजिट करेंगे, तब तक इसको एक बार छोड़ देते हैं। लेट अस गो एंड सी, बैंक निफ्टी को भी एक बार साइड में कर देते हैं हम लोग, और इंडाइसिस पे देखते हैं कि कौन से इंडाइसिस कहाँ पे चल रहे हैं। ओके, विक्स इज अप, ऑल राइट। सेंसेक्स यहाँ पर डिले दिखाता है, इसको इग्नोर करेंगे। बैंक निफ्टी हैज बिकम पॉजिटिव। माइक्रो कैप्स निफ्टी, ओके, ऑल द ब्रॉड इंडाइसेस आर नेगेटिव, बट कौन से सेक्टर्स हैं जो थोड़े से पॉजिटिव दिख रहे हैं? या अच्छा, ऐसे कोई भी सेक्टर्स नहीं है जो पॉजिटिव हैं। मेटल, मीडिया, आईटी, डिफेंस, कमोडिटीज, सीमेंट, ऑल द कोर सेक्टर्स आर ऑल डाउन। आईटी इज ऑल्सो डाउन टुडे। ठीक है, and IT we have been maintaining this 31,000, 31,000, 32,000, 31,500 strong resistance है। It needs to cross this for us to get a clear direction, तब तक ये ऊपर नीचे होता रहेगा। Right, along with this I will also want you to, now I will just check some of the questions। निफ्टी का चार्ट खोल के रखता हूँ and कुछ questions देख लेता हूँ। Herschel says, until the range is decisively broken, my view remains range bound. Absolutely, that's where Bank Nifty is. Veer Rathod, sir, will there be any effect of Warsh speech on Nifty 50? देखो, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए, बिकॉज ये आज नहीं, ये पिछले एक साल से बातें चल रही हैं कि भाई आगे चल के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। राइट, तो किस दिन होगा, क्या ट्रिगर हो सकता है उसका, वो किसी को मालूम नहीं, बट it is a matter of when and not if. Interest rates are set to rise either in this calendar year or next calendar year for sure, है ना, for sure, उसमें कोई दो राय नहीं है। We are entering into a rising interest rate scenario in the market. This is how the economies move. Inflation अभी भी ऊपर है, वेस्ट एशिया क्राइसिस has added fuel to the fire. Interest rates have to be increased to control inflation. ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, तो उससे सरप्राइज मत हो कि वो मार्च आज बोल रहा है या कल बोल रहा है, ये तो सबको पता है। सो इट्स नॉट इट्स एन ओपन सीक्रेट। मार्केट्स माइट रिएक्ट टू इट इन अ मैनर, ठीक है, मार्केट्स माइट रिएक्ट टू इट फॉर अ डे और टू, बट इवेंचुअली एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट, तो डोंट बी सरप्राइज्ड and design or work around your scenarios with this clear cut understanding that interest rates are set to rise either today or tomorrow होगा। तो उस सिनेरियो पे ही काम करोगे तो यू विल बी मोर करेक्ट। ओके, चलो। वीर राठौड़, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं जब क्वेश्चंस देखता हूं मैं आंसर कर देता हूं। बार बार वही क्वेश्चन पूछेंगे तो सर आप बैंडविड्थ ब्लॉक कर देते हो। राइट, बाकी लोगों के क्वेश्चंस मेरे से मिस हो जाते हैं।
सो while I am doing this session, there are multiple things that I take care of. तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर. All right. My September view on Bank Nifty remains range bound until we get a decisive breakout from the current range. Perfect. I mean, if that's your view, I mean, even I feel on similar lines. Sunabja says September should remain sideways unless some news pushes the banks up above weekly high of 58,000. Absolutely. I mean, we concur on that, right? It's a very simple equation. I mean, there have been a lot of calls on Bank Nifty being positive, bullish. Banks अभी तक perform नहीं किए हैं. इसके लिए Bank Nifty को अभी perform करना चाहिए. So on and so forth. भाई जब तक हुआ नहीं तब तक देखा नहीं. जब तक नहीं होगा तब तक मैं कुछ बोलूंगा नहीं. सिंपल है. इट इज एज सिंपल एज दैट. करके दिखाओ फिर मानेंगे. Sir, will there be any effect of, okay, same question repeated multiple times? No problem. All right, let's go to the Upstox Pro platform. थोड़ा सा अभी शायद लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं. I just like to spend a couple of minutes on this. ये सेशन पे हम लोग क्या करते हैं, होम पेज पे जाते हैं. होम पेज पे जैसे जाएंगे ना, we get a lot of data now. Market opening, ट्रेंडिंग स्टॉक्स मोस्ट बॉट. थोड़ा सा इसको लोड होने दीजिए तो बेटर होगा. ऑलराइट. ये you get some trending stocks, then you get trending options also. OI analysis तो हम लोगों ने अभी किया ही. Okay, along with this you have this SEBI by SEBI experts. ठीक है, advisory by SEBI experts. I think anybody who is starting out, right, on in trading, उनके लिए ये ठीक रहेगा कि you pay attention to licensed advisors who are suggesting trades, right? Like I'm not giving you a trade recommendation live in the live market, but there are a lot of advisors, including yours truly, who publish trading recommendations in this controlled environment, okay, as per SEBI guidelines. Okay, so you have a lot of F&O, MTF, margin trading facility, intraday, then stocks and commodities. You can go on any of these. Okay, check out the advice. Okay, check the advice, understand the advice, and if it concurs, if you like the advice, then consider. ओके, सो यहाँ पर आपको लाइक पूछते ना भाई स्टॉक में क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए. तो यहाँ पर आप जाएंगे, ये वाला सेक्शन जो है आपके मोबाइल पे भी दिखेगा और यहाँ पर भी दिखेगा. एडवाइजरी बाय सेबी एक्सपर्ट्स. क्लिक ऑन दिस. You will understand what this product is, what this service is. All right, and then take a view. मतलब explore this. This is a nice place to explore. Authenticated, genuine, SEBI registered advisors stock trading calls. Then you get option chain, trending MTFs, trending commodities, futures, IPOs, buzzing stocks. ठीक है, मोमेंटम गेनर्स, इंट्राडे स्क्रीनर्स. अब ये इंट्राडे स्क्रीनर्स भी एक अच्छा पोर्शन है जहां पे आप देख सकते हो. यू फर्स्ट सेलेक्ट बुलिश, बेरिश, सो ऑन सो फोर्थ. रिकवरी कहां पर हो रहा है, मोमेंटम बर्स्ट कहां पर हो रहा है, बुलिश क्रॉसओवर, ओपन इज इक्वल टू लो, जो हम लोगों ने दिसंबर में सीखा था इन आवर इंट्राडे सीरीज. ठीक है, एक्सचेंज आर्बिट्राज. ये भी आजकल एक्सचेंज आर्बिट्राज भी काफी हो रखा है. आईटीसी होटल्स में आर्बिट्राज इज 1.15%. इसका मतलब ये है कि एनएससी और बीएससी में, आई शो यू व्हाट दिस इज. अगेन नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन और एनीथिंग, सिर्फ ये आर्बिट्राज होता क्या है ये समझ लेते हैं. अभी आईटीसी होटल्स कर लेते हैं. नॉट दैट आई एम लिविंग इन आईटीसी होटल, आई एम स्टेइंग हियर, बट जस्ट सेइंग कि यहाँ पर दिख रहा है तो इसके लिए कर रहे हैं. एनएससी एंड बीएससी. ओके, तो अभी तो आर्बिट्राज निकल गया, या फ्यूचर्स भी कर लेते हैं. चलो, आई थिंक इट्स अ फ्यूचर्स आर्बिट्राज. फ्यूचर्स में है आईटीसी होटल. हाँ, आईटीसी फ्यूचर्स में है इधर. ऑल राइट, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आईटीसी फ्यूचर्स इज 26. आईटीसी फ्यूचर्स नहीं भाई, आईटीसी फ्यूचर्स नहीं, आईटीसी होटल्स.
ओके, आईटीसी नहीं है तो इट इज दिस ओनली। तो यहाँ पर तो आईटी आर्बिट्राज नहीं दिख रहा है मेरे को। आईटीसी फ्यूचर्स में लिस्टेड नहीं है, सो आई डोंट नो विच आर्बिट्राज आर दे टॉकिंग अबाउट। एनएससी में है, बोलते हैं आर्बिट्राज इज 1.5%, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 162। 162 तो है, बट एनएससी बीएससी में 5 पैसे का फर्क है, तो देर इज नो आर्बिट्राज इन माई ओपिनियन। लेट्स सी, ओपन इज इक्वल टू लो। कुछ स्टॉक्स हैं विच आर डूइंग स्ट्रॉन्ग बिकॉज ओपन होते ही मार्केट ऊपर जाने लगा इन स्टॉक्स में। तो यहाँ पर आपका देर इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, राइट। तो आप यहाँ पर काफी सारी चीजें समझ सकते हो। इनबिल्ट स्क्रीनर्स हैं, यू कैन गो टू दिस पेज, एक्सप्लोर इट इन डिटेल। ऑल राइट, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू हियर टू फाइंड आउट विच आर द स्टॉक्स दैट यू वांट टू ट्रेड। एक ये हो गया। नाउ along with this, यहाँ पर देखिए, आईपीओ, एडवाइजरी, स्कैल्पर, एल्गोवर्स, चार्ट्स, ऑप्शन चेन, स्ट्रैटेजी बिल्डर, पीसीआर, ट्रेडिंग व्यू, एफआई, यू गेट अ लॉट ऑफ फील्ड्स, सिलेक्शंस, जिससे आपको मार्केट की डेटा को समझने में आसानी होगी। एफआई डीआई डेटा पे भी यहाँ पर हम लोग एक नजर मार लेते हैं, एंड वी गो टू द मंथली, बिकॉज हम लोग डेली का नहीं देखना चाहते, हम लोग मंथली का देख रहे हैं। ये अगस्त मंथ है। अब क्या हुआ है, August month is still positive. FIIs are positive by 454 crores, right? Uh, the trend is healthy. It is encouraging. All right. आज MSCI इंडेक्स का रीबैलेंसिंग है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो हमको कल मालूम पड़ेगा। पोस्ट दैट वी विल बी एबल टू टेक अ व्यू वेदर दिस हैज बिकम nicely positive or not. Okay, now where is the market? Market are still weak, 24,000 को टेस्ट कर रहे हैं, एंड हमारा मेक जो है मार्केट का, इट कंटिन्यूज टू रिमेन वीक फॉर द डे, राइट। आर वी एट अ सपोर्ट लेवल? द आंसर इज यस। आर वी सीइंग एनी साइंस ऑफ आरएसआई imbalance? Not really. So it's a normal down day in the market. ठीक है, let me see some of the questions. Are there any fresh questions? My September view, no, there are no fresh questions. Bank Nifty continues to be in the range. Nifty continues to be a little weak. Option chain में हम लोग देख लेते हैं change in Y. Okay, this is change in Y on the smaller time frame. Has the first 15-minute candle closed? Yes. Are there any signs of RSI? Okay. Now, what do you see here? We are seeing positive divergence on RSI at a support level on the intraday time frame. All right. Does this mean that you are going to see a very strong up move in the market? The answer is no. Does this mean that the market can consolidate at these levels? Possible. Does this mean that the market can mean revert and try and touch the 24,100 mean on this time frame while maintaining the downward structure of the market, right? The weakness in the structure. The answer is possible. So two out of three things. One, will the market run strongly bullish? RSI divergence. The answer is no. Consolidate. The answer is yes. Can it mean revert? The answer is possible. So 2 out of 3, the market is either this or possibly this. इसका रूल आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना। ये स्ट्रक्चर जब तक होल्ड करता है, दिस 24,041 के आसपास का जो डे लो है, इसको जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ठीक है। अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है, देन यू कुड पॉसिबली सी फर्दर डाउन मूव, बिकॉज ये स्ट्रक्चर दिख रहा है।
इसकी वैलिडिटी क्या है? क्या 2-3 साल तक रहेगी? नहीं, इसकी वैलिडिटी फॉर द फ्यू कैंडल्स नाउ। अगर ये टूट के नेक्स्ट कैंडल में नीचे चला जाता है तो वैलिडिटी खत्म, इनवैलिडेट हो जाता है। Am I taking a trade here? Again, no trade recommendations or anything, but we are just trying to learn कि भाई मार्केट को रीड कैसे करते हैं ना। अगर मैं रीड करने की बात करूं तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग कॉल ओपन इंटरेस्ट राइटिंग हो रही है। इट इज टेस्टिंग द 24,050 मार्क, एंड देर इज अ लॉट ऑफ डाउनवर्ड प्रेशर इन द मार्केट एट 24,100। अगर आप देख रहे हो 24,100 पे ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड 24,000 पे ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मार्केट जो है ये 100 पॉइंट के बीच में अभी मंडराएगा। इट विल ट्राई टू कंसोलिडेट एंड दे टेक अ डायरेक्शन, बिकॉज वी आर एट दिस आइडेंटिफाइड सपोर्ट लेवल। आई एम होपफुल कि मार्केट यहां से सपोर्ट ले। ओके, सम क्वेश्चंस हैव पॉप्ड अप। गौरव अग्रवाल का क्वेश्चन है, इफ आई हैव वाई बिल्डअप सीन ऑन पुट साइड, कैन वी से मार्केट विल नॉट गो बिलो? या दैट वाज वन ऑफ द इन्फरेंसेस कि markets can consolidate around these levels. RSI divergence along with price stabilization. Yeah. Sir, I have seen market go drastically down with MSCI rebalancing. How to interpret it, or should we completely stay away during this time? Veera, Veera thought it is better you stay away from all this because these are, matlab, out of 250 odd trading days that you get in a calendar year, MSCI rebalancing 4-5 बार होता है, 3-4 बार होता है। अगर वो 3-4 बार, वो भी उस विंडो में, वो 15 मिनट का या आधी घंटे के विंडो में अगर आप ट्रेड ना करो, nobody is going to question you or your ability as a trader. Why you didn't trade? The true test of a trader is that he is able to successfully make profits during the MSCI rebalancing window. Nothing like that, right? Your wife or your girlfriend, I don't know, मतलब, or both will not question you कि ये पैसा तुमने कहाँ से कमाया। MSCI rebalancing के टाइम कमा के दिखाओ तो जानो। देर इज नो ट्रू टेस्ट ऑफ दैट, सो यू डोंट नीड टू डू दैट ओनली ना। आप शांति से, अगर 2:30 बजे के बाद एमएसए रिबैलेंसिंग कभी भी हो सकता है, इट इज नॉट दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2:30, इट कैन हैपन एनी टाइम। द ऑर्डर्स कैन बंच अप एंड फ्लो थ्रू एनी मोमेंट आफ्टर 2:30। तो अगर आप नहीं भी ट्रेड करते हो, आप उस दिन, से फॉर एग्जाम्पल टुडे इज एमएससीआई रिबैलेंसिंग ट्रिगर, okay, and it is scheduled between 2:30 and 3:30 or whatever. आप 2:15 2:30 के पहले निकल जाओ ना बाजार से, क्लोज द सिस्टम, फॉरगेट इट, वेदर इन प्रॉफिट और इन लॉस। हाउ डज इट, व्हाट चेंजेस? नथिंग चेंजेस ना, लाइफ विल गो ऑन इजीली। तो आप आराम से भी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऑलराइट, संगीत संगीता, बहुत अच्छा। योग ऑप्शन में भी रोज फ्री लाइव अपना एडवर्टाइजमेंट किया है किसी ने, तो ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ उसका। सर, आई वाज थिंकिंग निफ्टी 50 इज टक, निफ्टी 50 इज टक एट 24,039 लेवल और 24,149 लेवल इज गोइंग टू, नहीं, हाँ, तो वो रेंज में ही अटका हुआ है ना बाजार, नॉट गोइंग एनीवेयर। आई एग्री, आफ्टर 2:30 मोर कंफर्म बिकॉज ऑफ रीबैलेंस। ऑल राइट, चलिए, सो वी हैव सीन निफ्टी, we have seen the storm in the teacup. I think this is the best index to, as an options trader. अगर मेरे को आज पूछा जाए कि यार कौन सा इंडेक्स था पिछले 3 महीने में जो आपको सबसे अच्छा लगा ट्रेड करने में, इट्स हैंड्स डाउन बैंक निफ्टी। मतलब, अगर मैं जून में, सितंबर का, जून में जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ, जून एंड में मैं सितंबर का 3 मंथ अवे, 4 मंथ का मैं अगर स्ट्रैंगल बना के छोड़ देता तो, मतलब, मजेदार प्रॉफिट बनाया होता। राइट, दिस इज इन हाइंडसाइट ऑफ कोर्स, मुझे नहीं मालूम था कि ये ऐसा होगा, बट इवन नाउ विद द काइंड ऑफ, देखो अभी इसमें हो क्या रहा है यार, थोड़ा अगर मैं आपको बॉलिंजर डाल के दिखाऊं ना, कि जब हम लोग को लगता है ना कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसके बाद एक बड़ा धमाका आता है।
See, what you have to be careful now is, and I'm playing the devil's advocate, right? यहां से यहां तक मतलब फ्रॉम जुलाई अगस्त 2 महीने से बाजार जो है RSI 50 पे चल रहा है ना? 2 महीने से RSI 50 पे चल रहा है। अब मार्केट का भी जो है ना, ये बैंड्स जो है ना, बॉलिंजर बैंड्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, और देर इज अ स्क्वीज, right? Can you see this sharp squeeze? Now because there is a lot of squeeze, इसको हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न, because there is a VCP quite visible here, right? Don't be surprised if the market shoots up or shoots down sharply. Okay, don't be surprised. So while on the face of it, setting up a non-directional trade is what seems to be the obvious case, don't be surprised if there is a very sharp move. Okay, so whatever trade you decide, keep your position size accordingly and be ready for all scenarios. देखो, scenario analysis is what we can do. अगर सिनारियो ए होता है तो क्या करना चाहिए, बी होता है तो क्या करना चाहिए, सी डी ई अगर होते हैं तो क्या करना चाहिए, ये हमको क्लैरिटी रहेगी ना, तो ट्रेडिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी, और एटलीस्ट वी विल हैव सम मेथड टू द मैडनेस। ऑलराइट, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, आंख बंद करके नॉन डायरेक्शनल ट्रेड सेटअप बना दो, पैसा बन जाएगा। फिर किसी दिन अगर बहुत शार्प मूवमेंट आ गया तो बोलोगी कि यार नहीं यार, मेरा तो एनालिसिस गलत किया। नहीं, करंट एनालिसिस परफेक्ट है, साइडवेज मार्केट है, एब्सोल्युटली जीरो मोमेंटम है, 50 पे ही चल रहा है RSI फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, 2 महीने से 50 पे चल रहा है, मार्केट भी वहीं पर चल रहा है, उसी रेंज में चल रहा है, नैरो रेंज में। बट बिकॉज ऑफ दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज VCP ऑल्सो हैपनिंग, राइट? सो while the first instances, हाँ, on the face of it तो यार नॉन डायरेक्शनल सेटअप है, बट यू कुड ऑल्सो बी, यू शुड नॉट बी कॉट सरप्राइज्ड अगर ये होता है तो। राइट, सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमारा काम ये होता है कि हम सिनारियोस को समझे, सिनारियो एनालिसिस करें, और उसके बेसिस पे हमारे ट्रेड्स होने चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप द सेशन वाज यूजफुल, आई होप दिस पॉइंट वाज आल्सो यूजफुल। वेयर इज निफ्टी? Nifty has broken through the first 15-minute candle low and is showing weakness. So this is one of the scenarios that we had expected कि अगर ये hold होता है तो ठीक है, if not we could expect a further slide in this area. ठीक है, can we consider, can we see this also getting touched, which is 24,000 23,900 के आसपास? It could happen, it could happen. All right. All right, friends. So it is 9:43, 9:44. I will take your leave. I hope आज का सेशन अच्छा लगा आप सबको। कल निफ्टी का फ्रेश सीरीज की फर्स्ट एक्सपायरी होगी सितंबर मंथ की। कल देखते हैं कि बाजार ये वीकनेस को कंटिन्यू करता है, स्लाइड करके 23,700 23,600 के सपोर्ट पे पहुंचता है, या यहां से मार्केट इंट्राडे में आज कोई सरप्राइज रिकवरी दिखाता है। So I wish you all the very best for the day. Trade smart, trade in small quantities, and be aware of some basics so that you don't get caught off guard. चलिए, कल सुबह मिलते हैं at 8:45 AM sharp. Till then, take care. Bye bye.